अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोग का मेरा अगले व्लॉग में। तो ये हम चढ़े हैं म्यूज़ियम जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब ऑटोमन एम्पायर का पता ही होगा आप लोग को। After 1453, Mehmet II conquered this land and make this land for the Ottomans. So in that timeline, he said that I want my capital in here. So before the capital was Edirne, it's really close province from here. And after that, he just said that I want to stay in here. I'm gonna make Ottoman's capital in here. And after that, they make this palace for him, for his stay. And this place is like they started making this place between like 1453 to the 1460s. And at the end of the 1460s, this place finished, and Sultan Mehmet II started living here. And from him to the Abdulaziz I, Yes. every single sultan lived in here. Like 31 sultan lived in this palace. Yes. But after that, Abdulaziz I says that we need newer buildings, we need a new palace. Yes. And they make Dolmabahce Palace. You're gonna see Dolmabahce Palace from Yes, one of yes, the yes, I see. balconies Yeah, from yeah, here. yeah. And they moved there. And moved there. exactly from there they moved there. And after that, like end of the Ottomans, they stayed in a Dolmabahce and Yıldız Palace. How many People like the council members come early, go there and make some history, and they start the council meeting with the name of God and His Prophet. And like the Sultan watching and listening to that there was a lid, so he closed that lid. And after that, he closing that lid, and they don't know if he is there or not. So they are always careful, like the Sultan there, listening them and watching them from there. तो दोस्तों ये आप ऊपर साइन देख रहे होंगे, अल्लाह ये जो कलमा लिखा है इसके नीचे दो साइन ये महमद के हैं। But the collection is actually made on the second era because he loving the clocks. So that's why he just made himself a collection. Especially when you go inside and turn right, you will see the Pushim gifts. It's a really precious one. We are not able to do a presentation inside, so you can go inside and look every single one. And we're gonna see the churchyard, and after that we're gonna show like a few places in the courtyard. The first yard is belong to the public. So in that timeline the citizens can enter the first yard, and just because of that they actually make a few places for poor people, for the charity purposes. One of them is hospital, the other one is charity house. In that house they actually giving poor people the free clothes and free food. That's why when people need help, they come to the first place, first yard, and seeking help from the Sultan, and Sultan give them these kind of things for his charity. This yard is only belongs to soldiers, council members, and Sultan. If you're a normal citizen, you cannot enter from that gate. So that's why when they do like celebration or ceremony, they do this like with the army, they do in this place. With the citizens? No, not with the citizens. With the citizens, they do that place, that first yard. But without citizens, with the army and the council members, they do this in this place, second yard. So inside of the third yard and fourth yard is only belong to Sultan's family and the workers, slave workers inside. If you are a Grand Vizier, if you want to go inside, you have to take a permission of Sultan first. दोस्तों ये आप बंदे देख रहे होंगे कपड़े पहन के बड़ी टोपी, ये ना पे और पिछले ज़माने में जो थे वो दरवेश होते थे जिनके ऐसे कपड़े होते थे और बड़ी सी टोपी होती थी, और यहाँ पे बादशाह बैठते थे
उनका एक कमरा था, वहाँ पे बैठते थे। और ये जो ओटोमन एम्पायर है, जिनको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है, उनकी बीवियों के, उनकी बेटियों के जेवरात यहाँ पे ये इन्होंने रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत जेवरात है। और ये कीमती हीरा देख रहे किस तरीके से चमक रहा है। जिस तरह कोई और फेमस नहीं है, बहुत कीमती हीरा, इसी तरह ये भी तीसरा कीमती तरीन हीरा है। और ये समुंदर का किनारा, जो कि वो यहाँ ही था, थोड़ा बाहर जाते थे, मतलब आगे जाते थे तो एक खुला एरिया था ये इस टाइप का। तो यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, काफ़ी अच्छा व्यू था। मैंने भी वीडियो बना ली। सामने समुंदर था, कश्तियाँ जा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था यह व्यू मुझे, तो मैंने वीडियो बना ली। ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। और वो जो हीरा आप लोग ने देखा है ना अभी, वो उतना कीमती है जितना कोहिनूर हीरा था। और ये वो चीज़ है जो बादशाह के ताज पे लगाई जाती थी। ये देख सकते हैं आप, ये बादशाह के ताज पे लगाए जाते थे नग, ये जो जेवर टाइप का। और ये उनका तख्त, सोने का तख्त। और ये कपड़े जब ये बादशाह लोगों ने जंग पे जाना होता था तो ऐसे कपड़े पहन के जाते थे, ये वाले। और ये खंजर, ये इनकी तलवारें, ओटोमन एम्पायर की खंजर तलवारें देख सकते हैं। ये सर पे पहनते थे जब जंग। ये शील्ड, तीर कमान, सारा कुछ आप देख सकते हैं। और ये तख्त के नीचे रखते थे। और ये भी एक तख्त है जिस पे बादशाह लोग बैठते थे। और ये हाथ पे पहनने वाले एक तरीके से बैंड कह लो। और ये पता नहीं क्या था। और ये शतरंज खेलते थे इस पे, चेस जिसे भी कहते हैं, ये चेस खेलते थे इस पे, ओटोमन एम्पायर के बादशाह। और ये भी इनको तख्त गिफ्ट किया था किसी मुल्क ने, ये इनको शायद ईरान ने किया था। तो और ये तलवार देख सकते हैं आप, ये कहा जाता है कि उस्मान गाजी की तलवार है। लोग कहते हैं ये उस्मान गाजी की तलवार है। लोग कहते हैं कि जो बंदा था मेरे से कहता है पता नहीं ये है या नहीं, पर लोग कहते हैं कि ये उस्मान गाजी की तलवार थी। इर्तुगरुल का जो बेटा था जिसने ओटोमन एम्पायर बनाई थी। ये कुरान पढ़ते थे, ये इनका कुरान पाक। कैंडल काटने के लिए। और ये तस्वीर इनकी, और ये कैंडल्स जिस पे जो मोमबत्ती जलाते थे। तो दोस्तों ये व्लॉग इतना ही था, तो हम ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।